Namaste and welcome to this News Mobile Editors Roundtable on the Uttar Pradesh elections. The state votes for 403-member assembly beginning the 10th of February. As we know, the counting is going to be on the 10th of March. With us today is News Mobile's founder and editor-in-chief Saurabh Shukla and News Mobile's consulting editor Vinay Kumar. And the topic that we are discussing today is how different is this election being held in the midst of COVID? We've seen digital campaigning, virtual campaigning, but are the issues still the same in Uttar Pradesh, or is there anything that is different about these elections? Let's go straight across to Vinay Kumar for his take on how different this election has been, because we have seen only virtual campaigning, no major rallies, no crowds, no people gathering together. How do you see this election, Vinay? Ananya, this election, as we all know, the UP elections are the most crucial. This is India's most populous state, and the popular political saying goes that the route to Delhi's power center passes through Lucknow. And this time, it will be the first time that BJP is seeking re-election after 2017 massive victory in UP. And if the BJP is able to retain UP, it will be for the first time in 30 years that any party has come back to power. Once again, number one. Number two, you are right, Election Commission had imposed a lot of restrictions. बहुत सारे रोक लगाए थे इलेक्शन कमीशन ने, जो बड़ी रैलीज नहीं हो सकती कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए. तो बहुत जगह कॉर्नर मीटिंग्स की, डोर टू डोर कैंपेनिंग. वी सॉ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, सबने अपनी कैंपेनिंग बहुत छोटे छोटे स्तर पर की. प्रियंका गांधी वड्रा कांग्रेस की, जिन्होंने कमान संभाल रखी यूपी की इस बार, उनकी भी कैंपेनिंग इसी तरह से चली. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने यूट्यूब का सहारा लिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का और सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया. तो उस सेंस में यू आर राइट, कैंपेन श्रिल नहीं था, कोई हेक्टिक कैंपेन नहीं था, फीवरिश पिच नहीं थी किसी इस कैंपेन में. तो जहां तक कैंपेन के सवाल है, कैंपेन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा ज्यादा डिजिटल की तरफ झुकाव रहा. कोरोना के जो दिशा निर्देश थे इलेक्शन कमीशन के, उनको देखते हुए और जो सावधानियां बरती गई. तो इसी तरह से 7 फेजेस में भी इलेक्शन होगा और हमेशा यूपी में मल्टी फेज इलेक्शन होता आया है. तो हर फेज में 55, 60, 62 सीटें होंगी. तो आखिरी फेज 7 मार्च को देखा जाएगा. तो उत्तर प्रदेश में और तो ये बात ठीक है कि कैंपेनिंग इस बार अलग रही और उसी तरह से इश्यूज को भी उठाया राजनीतिक दलों. In fact, one thing I noticed one day, and although I don't live in Uttar Pradesh, I'm in Delhi. Saurabh, I switched on the TV, I went to YouTube, and the first ad that came up was of Priyanka Gandhi and the Congress. So it is different in that respect, as Vinay is also pointing out. But there are a lot of things that's changing on the ground in Uttar Pradesh as well, including the Jewar International Airport that's now coming up. How's the global community, especially the corporate community, viewing these elections? Ananya, I was in US recently, and I can tell you that there's a lot of interest there. And you speak to the business leaders there, even lawmakers there. There's a lot of interest about the Indian state elections, particularly in the state of Uttar Pradesh, because there is a sense that, as Vinay rightly said, that the road to Delhi emerges from Lucknow and Uttar Pradesh. But one thing would be that the investors are also looking at looking at the bigger picture. How will this election pan out to get a stable government in place? Because one of the things is, will the new government in Lucknow will be able to provide law and order, security of investors? Because of COVID, there were a lot of disruption. And now what the global community is looking at is investing in places which are relatively stable. There is no social strife. So that is also a very, very important aspect, that your communal unity has to be preserved. So whoever comes to power, and that's the reason, all the parties have been saying BJP is fighting on the plank of, a better law and order compared to the previous governments. But the big question for an investor is, whatever government comes to power in Uttar Pradesh, will they be able to provide that investor-friendly climate? Will they be able to provide safety for all their employees? That's very important. And I would say that, as we see the campaign unfolds,
the political parties need to be addressing it, because in a globally intertwined world it's very very important. जैसा कि पूरा जो विश्व है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट और जो चीजें कही जाती है कैंपेन के दौरान, और जब नई सरकार बनेगी, बड़ा जरूरी है कि जो एक कम्युनल हार्मनी है, भारत की जो एक यूनिटी का मैसेज है, वो जरूर जाना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं, उनको चाहिए एक स्टेबल क्लाइमेट, उनको चाहिए एक स्टेबल सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से प्रोवाइड करे, और हर जो नागरिक है उस राज्य का और उनके जो एम्प्लॉयज है खास तौर से उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करे। तो ये जो चीज है, तभी उत्तर प्रदेश का जो एक चुनाव है बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। और 10 मार्च के बाद कई इन्वेस्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि उसके बाद वो डिसीजन भी लेंगे कि किस तरह भारत में और किस जगह खास तौर से उत्तर प्रदेश और जिन प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट हो। Right, but investment, corporate sector is on one side. The farmers are on the other side, and we've seen the farm protests and the repeal of the farm laws when it. How do you think that's resonating with the people in Uttar Pradesh, and what impact can it have on election results in the state? Anya, farmers' issue and the agitation over the 3 controversial farm laws has been a major issue. In fact, not only in Uttar Pradesh, but in Punjab and Haryana and other states as well. And the problem was that this agitation was allowed to go on for nearly a year. And the government, all the blame was put at the step of the government because there was no dialogue with the farmers. So I think in a democracy that comes as a minus point. And ultimately, the Prime Minister had to step in November on Guru Purab Day and announce that his government has taken a decision to repeal the farm laws. But I think by then, the BJP's image had suffered a dent in not speaking to the farmers. And this was not so acute. This farmers' agitation was not so acute in eastern belt of Uttar Pradesh. But yes, from western belt, if you see, because we see big farmers here, sugarcane farmers, which is a cash-rich crop, potato farmers who are in Agra and Aligarh belt, and the sugarcane areas was also an issue. So this issue came up, and this has been a big talking point, because this agitation also, fanned out to belts in Haryana and in Punjab, where we saw all the borders of Delhi being blocked by the farmers, and this allowed this agitation, this protest found resonance with common people also, क्योंकि कहते हैं किसान आपका अन्नदाता, अगर अन्नदाता को इतनी तकलीफ हो रही है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सिर्फ ये अपने आप को डिफेंड करती रहे, तो इससे मैं समझता हूँ कि सरकार की इमेज के ऊपर जरूर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा। क्योंकि और किसी को नहीं, प्रधानमंत्री को 11 जनवरी तक बातचीत हुई पिछले साल किसानों के साथ, उनके संगठनों के साथ, मगर इसमें कोई सोल्यूशन समाधान निकला नहीं। तो ये एक टॉकिंग पॉइंट हमेशा रहा है इसमें, और फार्मर्स के साथ कॉमन लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया। मगर जहां तक जैसे सौरभ ने एक बात कही, कहते कहते रुक गए थे कि उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से देश में पहला प्रदेश होगा जहां पर कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, करीब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आएंगे। तो केरल जैसे छोटे प्रदेश में भी 1 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हमारे पास कोची में है, त्रिवेंद्रम में है एयरपोर्ट, और एक और एयरपोर्ट केरल में आ गया। एक 500 किलोमीटर की स्ट्रिप है उस केरल में करीब इतने ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। और उत्तर प्रदेश जो कि देश का इतना बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर है, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं थे। सिर्फ लखनऊ और वाराणसी की बात हम करते थे, मगर अब बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़ गया कुशीनगर। एक्सप्रेसवेज जो अखिलेश के समय पर एक एक्सप्रेसवे बना था, जब 2017 से पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, अब उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवेज हैं। तो उस तरह की एक इमेज में मैं समझता हूँ बदलाव जरूर हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर इस बार के इलेक्शन में अगर आप देखें तो और भी कई सारे इश्यूज उभर के आए, जो कि ज्यादा पॉलिटिकल कम सोशल इश्यूज, किसानों को लिए हुए इश्यूज, जैसे सौरभ ने एक और कहा कम्युनल हार्मनी और यूनिटी की बात, उसको लेकर इश्यूज वो एजिटेट
लोगों को मैं समझता हूँ कि कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जैसे पिछली बार 39.67% उनका वोट शेयर था और 312 सीटें जीती, जो अपने आप में एक रिमार्केबल मैं समझता हूँ इलेक्टोरल अचीवमेंट था। और योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2022 तक ये सरकार चलाई, तो एक स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी विथ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, वो भी बहुत जरूरी होता है कि अगर आप एक अंतरराष्ट्रीय दुनिया में इन्वेस्टर्स को संदेश आप भेजना चाहते हैं, कोई आए आपके यहाँ पर, आपके देश में, आपके प्रदेश में इन्वेस्ट क्यों करे, अगर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर कंटिन्यूटी नहीं है। आज एक सरकार आई, दूसरी सरकार ने आके बिल्कुल पॉलिसी चेंज कर दी, तो उसमें इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, मैं समझता हूँ। मगर हाँ, ये इश्यूज जरूर हैं, इस बार के फार्मर्स इशू भी रहेगा और टॉकिंग पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में ये इशू रहेगा। और ये बात इस बार बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें भी एमएसपी के ऊपर जोर दिया है, किसानों की आय बढ़ाने की जो बात कही है, वो सब पार्टीज ने उसके ऊपर जोर दिया है। तो फार्मर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो ये फार्मर्स का कोई भी इशू होता है तो रेजोनेट जरूर करता है कॉमन लोगों के साथ। जी, दो लास्ट सवाल है। Back to Saurabh, how Vinay was pointing out that this, of course, farmers' issue was not limited to Uttar Pradesh. It was an issue that found resonance across the country. Now, we've also seen Mamata Banerjee coming out in support directly of Akhilesh Yadav and lending her support to the Samajwadi Party. Do you see a hint of opposition unity now ahead of UP elections? Ananya, analyzing UP, talking to observers, talking to people on the ground, I can tell you one thing. Definitely opposition unity will help the opposition, especially Akhilesh, and Jayant. But I would still say that even now, Prime Minister Narendra Modi continues to be the most towering figure when it comes on UP. If you see, as Vinay कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने काफी काम भी किया, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, पर अभी भी जो वोटर है उनके दिमाग में एक चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो छवि है वो अभी भी सिंगल मोस्ट डोमिनेटिंग वो इमर्ज कर रही है। इतना ऑपोजिशन यूनिटी डेंट कर पाएगी, बिकॉज अगर आप देखें कि एक मुस्लिम जो वोट्स है उस पर कहा जाता है कि काफी क्रिटिकल है कुछ सीट्स पर ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है वहां पर, तो क्या वो वोट स्प्लिट कर पाएंगे? कुछ मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। तो बड़ा एक जिसे कहते हैं कि ये इस कॉन्टेस्ट में जहां स्ट्रेट कॉन्टेस्ट नहीं है, वहां मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को फायदा हो सकता है। पर डेफिनेटली एक चीज तो है कि अखिलेश जो है अपनी तरफ से काफी जोर कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कही जा रही है कि एक प्रबल जिसे कहते हैं कि ओपोनेंट वो कर रही है। ममता बनर्जी का एक सीमित बेस है, वो चाहती हैं, बिकॉज उनका एक नेशनल पॉलिटिक्स का भी एम्बिशन है, तो वो चाहती हैं कि किसी तरह वो एक जो कांग्रेस पहले एक यूनिटी ऑपोजिशन का जिसे कहते हैं कि पोल बनता था, वो चाह रही है कि किसी तरह वो बन जाए। मैं एक चीज और आपको बताऊं कि मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कोविड का भी होने वाला है, क्योंकि काफी लोग जो है उनकी जान भी गई, कई लोग ऐसे सिटीज में कोविड का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर होगा। और एक चीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया है, काफी लोग आपको पता है कि कोविड से इम्पैक्ट हुए, तो उस सब का प्रभाव पड़ सकता है। पर अभी भी मुझे लग रहा है कि जैसा विनय भी कह रहे थे कि जो ओवरऑल बिग पिक्चर है, जब देखें स्टेबिलिटी का, जब देखें कि अगर लॉ एंड ऑर्डर है, हालांकि काफी इंसिडेंट वहां हुए यूपी में जिससे काफी ज्यादा इमेज का फर्क पड़ा यूपी की, पर मुझे लगता है कि वोटर्स बिग पिक्चर देख रहा है। और एक बड़ी बात होगी बूथ मैनेजमेंट, जो भी पार्टी ज्यादा बेटर बूथ मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं कि डिजिटल कैंपेन में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि उस दिन वोटिंग के दिन आप कैसे लोगों को वहां पर वोटिंग के लिए लेके जाएं, वो बड़ा क्रिटिकल होगा। तो बूथ मैनेजमेंट जो होगा वो एक क्रिटिकल होगा इस इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करने में। Right. For the last ball, I'll toss it to Vinay now. Vinay, how do you see this election result impacting national politics? Because you can see that all eyes are on Uttar Pradesh, huge, most populous state, 403-member assembly. Mamata Banerjee is right there. Prime Minister Modi himself is also campaigning. He's, as Saurabh was pointing out, the prominent face still. How do you see the results of these elections affecting politics nationally?
Yes, Ananya, we have to remember that 2024 is the year when we will see Lok Sabha elections are due in 2024. And BJP managed to improve its tally in 2019. They crossed 300 magic mark. So the all efforts are on to forge some kind of an opposition united front to take on BJP. Because BJP has already reached its peak, and Prime Minister Modi is very unsparing in his criticism politically, in terms of political, speeches. If we see, it's very hard hitting on Congress and on one family ruling the nation. Bottom line is this: that Samajwadi Party, which had polled something like 21% of votes in last 2017 elections in UP and managed to win about 47 seats. Even if they do much better, even if let us suppose even if BJP manages to retain Uttar Pradesh, it will be a big achievement for the BJP. It will be a shot in the arm for them to stake their claim again in 2024 elections, general elections. Number one. Number two, even if Akhilesh manages to improve his tally, Akhilesh and Jayant both are being, seen as youth icons. Both are educated abroad, and they have. Akhilesh has been a former chief minister. Even if Samajwadi Party, if it crosses 100 mark, 150, he would have made a mark on the national level of politics. And Mamata Banerjee's only cue to get into UP is that she managed to stop BJP in West Bengal. Now she wants that SP and RLD, they should be able to stop BJP's, coming to power in Uttar Pradesh. But most certainly, if BJP manages to retain, it will not only raise status of Yogi Adityanath as chief minister on the national scale also, but it also boost BJP's prospects nationally. In terms of better image and a party which has been able to retain Uttar Pradesh, so it will have a positive impact on BJP. But if BJP manages to lose some seats, yet manages to hold on to power, even then opposition unity will get some kind of, I think, a positive aura that these young boys in SP and RLD, because RLD had lost all the major elections. Ajit Singh had lost election, Jayant Chaudhary had lost, but this time around there has been a lot of rallying around SP and RLD. So if they have nothing to lose, I mean, they have to improve their performance. And if they become a rallying point for opposition unity, which is still 2 years away, I think that will be a positive talking point for the opposition unity. Yeah, Ananya, before we wind up, presidential elections, उस पे भी काफी इम्पैक्ट होगा क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा वहां से मत आते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी ड्यू होगा. तो जाहिर बात है कि दोनों ही पक्ष, बीजेपी और ऑपोजिशन, दोनों चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वहां से उनके एमएलए चुन के आए, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा. और एक जिसे कहते हैं एक सिग्नल तो जाता ही है. और जाहिर बात है कि 2024 जो है उसका बहुत कुछ, जैसे कहते हैं कि जो उसकी फाउंडेशन स्टोन है वो यूपी के रिजल्ट्स पर लिखी जाएगी. Right, you're right. This is also the year of the presidential elections, and also, as Vinay was pointing out, I think it's about the political stature of each of these personalities, like Yogi Adityanath or Akhilesh Yadav. Whoever wins, it's going to be a rising political stature for that candidate himself ahead, going forward to the national elections as well. Saurabh Shukla, Vinay Kumar, thanks for joining us. We'll keep the discussion going on because there are so many other states to talk about and lots to look forward to. Thank you. Thank you. Dhanyavad. Thank you.